Good morning everybody. Myself Sunita Sinha. Today I am going to explain numerical sums of chapter number 8 motion. Firstly, take a look on the sum formulas which are used in our numerical sums. First, speed is equal to distance upon time taken, that is V is equal to S upon T. Here we indicate speed of the vehicles. S means distance covered by the object and T means time taken. Second, average speed is equal to total distance upon total time taken. Third, average velocity is equal to u plus v upon 2. Here u means initial velocity and v means final velocity. A is equal to v minus u upon t. A means acceleration, v means final velocity, u means initial velocity and t means time taken. V is equal to u plus at. Next, S is equal to 80 plus half at square. 7 number, V square minus U square is equal to 2AS. If your object move in uniform circular speed, then we use the formula circumference is upon time taken. Circumference means 2 pi r. Now, our first question is convert given speed into meter per second. Okay, this one the simple question. But for exam, it is important as a MCQ. 20 किलोमीटर पर आवर मीन्स 20 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना. सो यू मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना. इट मीन्स 60 इंटू 60 हाउ मच 3600. जस्ट कट आउट 20 हेयर कट. 2 5 जा 10 and 2 18 जा 36. Here 20 into 5 upon 18. Okay, directly you use 1000 upon 3600. In that place you use 5 upon 80. Now cut out 2 9 ja 80, 2 10 ja 20. Now 50 upon 9. After dividing we get 5.5 meter per second. Okay. Now again explain with the other example. 35 kilometer per hour. Here directly we multiply 5 upon 18. आप चाहो तो 1000 upon 3600. Otherwise आप directly in short use 5 upon 18. Now 35 5 जा 175 upon 18. Okay, अब 18 से divide करो. Then you will get 9.72 meter per second. Okay, in this way easily you convert kilometer per hour into meter per second. Next question is a car travels with a speed of 30 km per hour and they return back with a speed of 50 km per hour. Find the average speed. आपको average speed निकालना है. Then in starting हमने पढ़ा average speed is equal to total speed. Total speed upon total टाइम टेकन. तो आपका यहाँ पे टोटल स्पीड कितना है? तो फर्स्टली उसने क्या किया 30 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न हुआ आपका 50. इट मीन्स 30 प्लस 50 एंड टोटल टाइम टेकन 1 आवर प्लस 1 आवर. दैट्स 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार. Now your next question is exercise question number 1. An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? यहाँ पे आपका ट्रैक यानी पाथ कैसा है? सर्कुलर, जिसका डायामीटर गिवन आउट है 200 मीटर. ओके, सपोज दिस वन द स्टार्टिंग पॉइंट A and diameter AB. Now diameter 200 meter, so find out the radius r. R is equal to 200 divided by 2. It means how much? 100 meter. In one round के लिए आपका एथलीट कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड. बट उसने टोटल कितना टाइम लिया? 2 minutes 20 सेकेंड. 2 minutes 20 सेकेंड को आप सेकेंड में कन्वर्ट करो. सो 2 multiply 60 plus 20. सो 120 प्लस 20 140 सेकेंड. यानी वो कंटिन्यू सर्कुलर ट्रैक पर 140 सेकेंड घूमता रहा. 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कंप्लीट करता है. ठीक है.
वन राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा? सो 140 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कट, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, इट मीन्स 7/2 राउंड. कन्वर्ट इनटू डेसिमल, दिस वन 3.5 राउंड, यानी एथलीट पूरे सर्कुलर का 3.5 राउंड लगाता है. अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ लेंथ आपको निकालना है. यहाँ पे आपका पाथ लेंथ कैसा है? सर्कुलर, इसलिए हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? सर्कमफेरेंस. और वो कितने राउंड लगाता है? 3.5. सो मल्टीप्लाई 3.5. Now put out the value of formula of circumference, 2 pi r into 3.5. 2 pi r, put out 2, 22/7. r हमने फाइंड आउट किया था 100, मल्टीप्लाई 3.5. अब पॉइंट हटाकर आप नीचे 1 0 डाल दो. सो 0 0 कट, 7 5 जा 35. आप मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट 2200, यानी 2200 मीटर. दिस वन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट. अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, दिस वन द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. आप फिर से रिमाइंड करो, आपका एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पे राउंड कर रहा है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, एंड हाफ ऑफ द सर्कल कवर करने के बाद बी. सपोज कर लो आपका एथलीट फर्स्ट पॉइंट ए से लगाता है, 3 राउंड कंप्लीट करता है. 3 राउंड कंप्लीट करके वो वापस कहाँ आ जाएगा? पॉइंट ए पे. मगर टोटल राउंड उसने कितना लगाया? 3.5. सो फिर वो वापस ए से बी हाफ सर्कल लगाएगा. इट मीन्स उसने फाइनल पोजीशन कहाँ पे स्टॉप किया? बी, और इनिशियल पोजीशन हुआ ए. इट मीन्स ए बी. Here AB is the diameter of the circle. Diameter how much given there? 200 meter. This one our displacement of an object. Now next question is exercise question number 4. A motorboat starting from rest on a lake accelerated in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Firstly, जो भी आपके given out है उसको निकालिए. Here given starting from rest, it means initial velocity, that is u, is equal to 0 meter per second. Accelerated is 3 meter per second square. It means it is a. A means acceleration. So a is here given 3 meter per second square. For the time, कितना टाइम लिया उसने? 8 seconds. So t is equal to 8 seconds. How far does the boat travel? It means you find the value of s. According to given, we use the formula s is equal to ut plus half at square. Now put out the value. U means 0, t means 8 plus half, a means 3, t means 8, 8 square. Now 0 into 8 means 0 plus half 3, 8 square means 64. Now cut out 2, 32 ja 64. Now we have 3 into 32. Now multiply these two numbers, then we get 96 meter. This one the answer of given question. Next question is question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, and after what time will it strike the ground? Okay, now just see the question. Here given ball is gently dropped from a height. It means in starting ball is in rest position. So we will take u is equal to 0 meter per second. Height 20 meter. H is equal to 20 meter. But according to concept of straight line, this is the value of s. If the velocity increase uniformly at the rate, it means acceleration a is equal to 10 meter per second square. Now you will find
वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल वेलोसिटी. v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. व्हाट टाइम? इट मीन्स यू फाइंड द वैल्यू ऑफ t. For finding the value of v, we use the formula v is equal to u plus at. Just see one time formula. You have the value of u, you have the value of a, but we have not the value of t. इसलिए हमको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ t. For this purpose, we use the formula s is equal to ut plus half at square. Now put out the value. U means 0. We not have the t, so we write down t plus half. A means 10 here given and t square. And s is also given here 20. Now whole things are put it. Now cut out. 2 5 ja 10. Here 20. 0 into t means 0 plus 5t square. Now you write down 20 is equal to 5t square. So t square is equal to 20 divided by 5. 5 इस साइड मल्टीप्लाई में है, so इस साइड आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. Now 5 4 जा 20. t square is equal to 4. So t is equal to square root of 4. स्क्वायर इस साइड आएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा. So t is equal to 2 seconds. Okay, this one your one answer. Now we find the value of final velocity. So v is equal to u plus at. U means here given 0. A how much given here? 10. And t already we find 2 seconds. So we here put out 2. So 0 plus 10 2 ja 20. So here answer is 20 meter per second. This one the final velocity when the ball is strike to the ground. Question is question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Here given radius r is equal to 42,250 km. Okay. अब इसको मीटर में चेंज करो. So we multiply by 1000. Multiply by 1000, then it convert into meter. Here time taken is given 24 hours. और टाइम भी किस में होना चाहिए? सेकेंड में. So we multiply 24 into 60 into 60 second. Now we use the formula of speed. Speed is equal to distance upon time taken. Distance upon time taken. Okay. Here object is moved in a circular orbit. So distance means circumference of the circle. And that formula is 2 pi r. So time taken is t. Now your speed formula become 2 pi r upon t. Now put out the value of all this. So 2 pi means 22 upon 7. R means 42,250 multiply by 1000 upon t. T means 24 into 60 into 60. Now cut out 1 0 1 0. This 0 will cut. 2 12 ja 24. 2 6 ja 12. 2 11 ja 22. Now 2 5 ja 10. 2 3 ja 6. So your number remaining 11 into 42,250 into 5 upon 7 into 3 into 6 into 6. Now multiply and divide. It means after calculation you got the answer, that is 3073.74 meter per second. This one the speed of a satellite. Now next question from page number 110. Question number 4. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? Okay. Here racing car. Racing car in starting have rest position. It means initial velocity is 0 meter per second. After some time it move uniform acceleration of 4 meter per second square. It means it is the value of A, acceleration 4 meter per second square.
How much time taken? 10 seconds. T is equal to 10 seconds. Now find the distance. Distance means S. S is equal to dash. Now, which formula we use here? S is equal to UT plus half AT square. Now put out the value. U means 0, T means 10 plus half, A means 4, T square. It means 10 square. 10 into 0 means 0 plus half into 4. 10 square means 100. So 2 2 ja 4. That's 200 meter. This one the distance covered by the racing car in 10 seconds. Next question from page number 103. Question number 2. A bus decreased its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Here initial velocity is 80 km per hour. पहले इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो. इन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था इफ यू वांट टू यूज शॉर्टकट नंबर देन यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5/18. तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. now cut out 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 and 1 0. It means 200/9. After dividing we will get 22.22 meter per second. Now final velocity here given 60 km per hour. Okay, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए. So we multiply by 5/18. 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 and 1 0. It means 150/9. After dividing we will get 16.66 meter per second. Okay. Now how much time here given? T is equal to 5 seconds. We use the formula of acceleration. A is equal to V minus U upon T. Put out the value of V, U and T. 16.66 minus 22.22. And time is given here 5 seconds. Okay. Now minus these two terms. Here रफ में मैं करके दिखा रही हूँ. 22.22, 16.66. Okay. This one 12. 12 minus 6, 6. Here become 11. 11 minus 6, this one the 5. 2, here 1 already gone. So 11. 11 minus 6 is equal to 5. This one become 1. 1 minus 1 is equal to 0. It means you have the number 5.56. Here bigger number is with minus sign. So we put out here minus. Divided by 5. Then you get 1.11 meter per second square. It is the acceleration of the bus. Now next question from page number 103. Question number 3. A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. Now here train is in a starting rest position. So we will take U is equal to 0 meter per second. Now final velocity become 40 km. It means V is equal to 40 km per hour. अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई 5/18. 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 0. It means 100/9. After dividing we will get 11.11 meter per second. Here time is given 10 minutes. 10 minutes. Now convert into seconds. So 10 multiplied by 60. So we get 600 seconds. Okay. Now we put the formula of acceleration. A is equal to V minus U upon T. Here V is equal to 11.11 minus U is equal to 0 and time is equal to 600. So 11.11 upon 600. अब ये डेसिमल को भी रिमूव करेंगे. So 11 upon 600 divided by 100. Okay. After calculation you will get 0.018 meter per second square. This one the acceleration of the train.
Now next question from page number 100, question number 1. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. Okay, answer of this question is yes. Yes, an object move through a distance. अगर कोई object distance move करता है तो sometime उसका displacement zero हो सकता है. For this one we draw a path. Suppose this one your path of an object you're moving. Initial point is 0. यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया. सपोज करो वो पॉइंट ए पे पहुंचता है एंड आफ्टर देन पॉइंट बी पे. ठीक, तो डिस्टेंस कितना हुआ? सपोज कीजिए दिस वन योर 20 किलोमीटर एंड दिस वन योर 30. तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ? 30 किलोमीटर. डिस्टेंस हाउ मच? 30 किलोमीटर. ओके, बट सपोज कीजिए आपका ऑब्जेक्ट ओ टू बी गया एंड रिटर्न बैक बी टू ओ आया. तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 30 प्लस 30. ओके, दिस वन द 60 किलोमीटर. बट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो योर ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन इज ऑल्सो ओ एंड इनिशियल पोजीशन इज ऑल्सो ओ. वो स्टार्टिंग भी आपका ओ से किया था, एंडिंग भी ओ से किया. It means its value is 0 kilometer. So we can say that कि sometime object long distance cover करने के बाद भी उसका displacement क्या हो जाता है? 0. So you write down the answer. Yes, an object has moved through a distance. It may be have 0 displacement.